From the night skies over Kabul to the rugged frontier of Khyber Pakhtunkhwa, a new war has erupted across the Afghanistan-Pakistan border this October. The roots trace back to 2021, when the Afghan Taliban seized power in Kabul, emboldening the Tehreek-e-Taliban Pakistan or TTP to ramp up attacks from Afghan safe havens. Islamabad accuses Kabul of harboring over 6,000 TTP fighters, while the Taliban denies it. By early 2025, cross-border strikes became routine, with Pakistan launching operations like the February raid in South Waziristan that killed 30 militants, and March clashes at Torkham Crossing, forcing 15,000 residents to flee amid gunfire and border closures. Fast forward to October 8th, in Pakistan's Kurram district, TTP militants ambushed a military convoy with roadside bombs and gunfire, killing 11 soldiers including 2 officers. The TTP claimed responsibility, vowing to overthrow Islamabad and impose a caliphate. Pakistani forces retaliated immediately, raiding a TTP hideout in the Tira Valley and eliminating 19 militants in a fierce gun battle. जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं। उनके एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। और आज जो है हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं उनको कंडेमनेशन करने के से कतराते हैं, उनकी जो उनकी मजम्मत करने से कतराते हैं, खुल के बात नहीं करते। ये चीज जो है ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, डिप्टी स्पीकर साहब। Pakistan launched airstrikes into Afghanistan, targeting TTP camps in Paktika and Khost provinces. 2 loud explosions rocked Kabul, which the Taliban blamed on Pakistani jets violating sovereign airspace. Locals reported shops destroyed in a civilian market. No casualties were confirmed from the blasts by Afghanistan. However, Pakistani sources claim that the strikes killed top TTP commanders. In retaliation, Afghan Taliban forces opened fire on Pakistani military posts across 5 provinces: Kunar, Nangarhar, Paktiya, Khost and Helmand. Clashes raised at over 6 points along the Durand line from Angur Adda to Baramcha. Taliban spokesman Inayat Khurazmi declared the operations successful. Taliban forces have captured several outposts from the Pakistani army across the Durand line in Kunar and Helmand provinces. Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi condemned the attacks as unprovoked, accusing Afghan forces of targeting civilians and vowing a befitting reply. हम तो उनसे सिर्फ एक इंतहाई फेयर, इंतहाई जायज़ बात करते हैं कि आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स
دہشت گرد گروپس ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right to engage them, and we clearly communicate and we put the evidence کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں, یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے, جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 3.5 ہے. سال 2025 میں خیبر پختونخوا میں ان آپریشنز کے دوران 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی, جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز اور جوانان, پولیس کے 73, جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں. As of October 12, 2025, the intense clashes along the Pakistan-Afghanistan border have concluded, with both sides announcing the end of their operations. Saudi Arabia, having signed a mutual defense pact with Pakistan just last month, issued a statement expressing deep concern over the tensions, calling on both nations to exercise self-restraint, avoid further escalation, and pursue dialogue to maintain regional stability. Qatar echoed this, prioritizing dialogue, diplomacy, and restraint to prevent broader instability.